नमस्कार। ज्ञानोत्सव की श्रृंखला फिर से एक बार शुरू हो चुकी है वेबिनार्स की। पिछली बार हम लोगों ने प्रोफेसर मनीषा प्रियम को सुना था। इस बार हमारे बीच एक युवा अर्थशास्त्री गुरप्रीत जी हैं, गुरप्रीत सिंह, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। और उनके बारे में थोड़ा सा आपको और परिचय उनके साथी जो उस डिपार्टमेंट में हैं डॉक्टर अवनींद्र नाथ ठाकुर, वो भी देंगे। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि हम लोग एक अच्छा सत्र आज आयोजित कर पाएंगे। एक्सेस टू नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, स्टडी ऑफ बिहार एंड पंजाब। जैसा कि हमारा आप जानते हैं कि नियम है कि 45 मिनट का एक प्रेजेंटेशन टाइम रखते हैं और उसके बाद आधा घंटा से 45 मिनट का कोशिश करते हैं कि डिस्कशन के लिए टाइम हो। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं अवनींद्र नाथ ठाकुर जी को कि वो गुरप्रीत सिंह जी के बारे में एक परिचय दें और फिर गुरप्रीत जी अपनी बात कहेंगे। नमस्कार सभी लोगों को। एक्चुअली जो टॉपिक है आज इसका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके पहले मैं गुरप्रीत जी, इसलिए मैं बाद में गुरप्रीत जी पे आऊँगा। मुझे लगता है कि किसी भी, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, किसी स्टेट के लिए नहीं, किसी भी देश के लिए और किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आज के समय में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एग्रीकल्चर से इतर उद्योग की तरफ मूव करना, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हो या टोटल आउटपुट के क्षेत्र में हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और इनफैक्ट और भारत की मैं कहूँगा ट्रेजेडी ये रही है कि पिछले 70-75 सालों में जिस रफ्तार से एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ या नॉन एग्रीकल्चर की तरफ मूव करना चाहिए था, हमारा नहीं हुआ है, ना तो आउटपुट के क्षेत्र में ना ही एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक 1951 में जितना रेलिवेंट था, शायद 75 साल के बाद उससे ज्यादा रेलिवेंट आज के समय में है। और तो ये गुरप्रीत, अच्छा, इस टॉपिक पे गुरप्रीत जी की पीएचडी थी। उन्होंने अपनी पीएचडी में बिहार और पंजाब में नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट को कंपेयर किया था, क्या सिचुएशन है दोनों के बीच में। और कंपैरिजन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चरली बहुत डेवलप्ड स्टेट है और बिहार एग्रीकल्चरली काफी बैकवर्ड स्टेट रहा है। और इनफैक्ट बिहार के लिए अलग से इसकी चुनौती है क्योंकि बिहार में मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अभी भी इंडिया के सबसे रूरल स्टेट्स में से बिहार है। तो बिहार गवर्नमेंट के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय में एग्रीकल्चर से अवे, लेकिन ऑफ कोर्स नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब है अगर रूरल एरिया में भी हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो एग्रीकल्चर से इतर हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है, वैसे गुरप्रीत जी ने पीएचडी जेएनयू से किया है। उसके बाद वो सीबीजीए नामक संस्था में काफी दिनों तक काम किया, जहां वो गवर्नमेंट फाइनेंस के ऊपर काम करते थे। खासकर उन्हें एग्रीकल्चर में जो स्टेट की फाइनेंसिंग है उस पर काफी उनका काम है। उनके कई आर्टिकल्स ईपीडब्ल्यू या कई सारे इंपॉर्टेंट जर्नल्स में हैं। आप टाइप करेंगे उनके सीरीज ऑफ जर्नल्स जो पब्लिकेशंस हैं वो आ जाएंगे। उनका काफी काम एग्रीकल्चर के फाइनेंस पे और स्टेट के फाइनेंस पे रहा है। और अभी रिसेंटली उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है, जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। और ये जो टॉपिक है ये एक कड़ी है एक्चुअली इनकी पीएचडी और जो अभी हम लोगों ने प्रपोज किया है एक स्टडी जो कि आगे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्ट को देखने की बात है बिहार में, उसके बीच की एक कड़ी है। तो जिसमें ज्यादातर एनालिसिस उनके पीएचडी को लेकर है, लेकिन उनको आगे बढ़ाने की बात है, कैसे उनकी पीएचडी और आगे इस तरह के प्रोस्पेक्ट को कैसे कनेक्ट किया जाए। ये जो टॉक है उसके बीच की एक कड़ी है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं गुरप्रीत जी को हैंड ओवर करता हूँ। वो इस पर टॉक करेंगे, फिर बाद में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे, जो भी क्वेरीज होगी वो बाद में हम लोग उसको देखेंगे। स्वागत है गुरप्रीत जी। आइए, अब मंच आपका है। आप हिंदी या अंग्रेजी किसी में बोल सकते हैं। आप जी फ्री जी। हैं अपनी प्रेजेंटेशन। थैंक यू अवनिंद्र भाई एंड थैंक यू प्रदीप जी। बहुत बहुत प्लीज अपना धन्यवाद सभी का। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। प्रदीप जी, एक्चुअली मैंने फोन से किया है। अगर आप आप जो बोल रहे हैं उसका साउंड आउटपुट दूसरी जगह से ले रहे लगता है। अच्छा, एक एक मिनट, मैं सिंगल एक जगह सोर्स से। से रखिए तो आ जाएगा। ओके।
हेलो जी जी। जी, सभी का धन्यवाद। और आपका वीडियो नहीं आ रहा सर। ऑफ है, ऑफ है आपका, म्यूट है। अवनीन जी मैंने म्यूट एक्चुअली है। हाँ, मैं कह रहा हूँ किसी दो एक जगह पे से या तो मैंने किया है। मोबाइल या फिर लैपटॉप या टैब किसी एक पर ऑन एक करके पर हो शिफ्ट जाएगा। कीजिए, हाँ। हाँ, साउंड का सोर्स वही होना चाहिए जो आपके कैमरा का सोर्स है। अच्छा, मैं एक्चुअली फिर एक बार प्रेजेंट लैपटॉप से कर लेता हूँ और ठीक, यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक। बट मेरा प्रॉब्लम यही रहेगा कि यहाँ से फोटो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो मैं प्रेजेंटेशन जैसे ही कंप्लीट करूंगा फिर मैं फोन से कनेक्ट कर लूंगा। आज थोड़ा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है लैपटॉप में, हो नहीं पा रहा है या सॉफ्टवेयर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए, ठीक है, ठीक है, बोलिए। हेलो। जी जी, जी। प्रेजेंट कीजिए। मैं माफी चाहूंगा कि ये जो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ये आई हैं, और नेक्स्ट ठीक, टाइम से ध्यान रखा जाएगा इसका। जी। ठीक। तो धन्यवाद। और ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अवनींद्र भाई ने कुछ तकरीबन 6 महीने पहले मुझे इस प्लेटफॉर्म से अवगत करवाया था। और मुझे चांस भी मिला था अपनी पीएचडी में बिहार का, जब मैंने सर्वे किया था तो कुछ एरिया कटिहार और कुछ एरिया जो पटना डिस्ट्रिक्ट का था वो मैंने सर्वे किया था। तो इस प्लेटफॉर्म और पीएचडी के बाद थोड़ा अनफॉर्चुनेटली फिर कोविड शुरू हो गया, और उसके बाद मेरे जो एंगेजमेंट थे पब्लिक फाइनेंसिंग एंगल से मैं देखना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर को। तो थोड़ा सा मैं इसमें इसको आप बोल लीजिए कि इसको साइड लाइन पे करते हुए मैंने दूसरा जो एरियाज ऑफ रिसर्च थे उस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। बट फिर जब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा तो दोबारा मुझे लग रहा है कि इस एरिया में मुझे जरूरत लगी कि इस पे रिवाइवल करना चाहिए, क्योंकि नॉन फार्म की जब भी हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो रूरल नॉन फार्म जो सेक्टर है वो काफी अभी भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि स्टार्टिंग में कॉन्टेक्स्ट में समझाया था। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ आपका। और जो आज का टॉपिक है, जी, जो आज का टॉपिक है एक्सेस टू रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो मैं थोड़ा मिक्स करके बोल लूँ तो बेहतर होगा। ये आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आप कंफर्टेबल है। ओके ओके, थैंक यू। So the context of this study is related to, if we uh, see the context of structural transformation of Indian economy. So the importance of rural non-farm sector becomes very, very important, starting from the early days of Green Revolution, then coming to the latest, the last 30 years of our economic reforms. Now we are having a situation of unemployment or underemployment, or you can say sometime economists say due to the skill gap or the digital economy, we are not able to absorb our labor force. So in all these terms, uh, when we talk about the absorption of rural labor, who is uh, in one way is leaving agriculture due to a number of factors, are not able to grab remunerative employment in non-farm sector, um, regardless of urban or rural region. Uh, so the situation which we foresee today, we can say the rural non-farm sector, the growth of rural non-farm sector in contemporary regime, we have to see it very critically, because uh,
the farm sector is not able to generate employment opportunities, or in the recent decades, we are actually having a negative growth in this sector. So when there is no employment generation in the non-farm sector, in the industry or services sector in urban region, so what 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 is the next possible um, state of affair in employment is either to move out from one region and migrate to other region, or getting absorbed in some kind of petty employment in non-farm sector. So there are a number of studies starting from mid 60s in India, when the Green Revolution uh, was on the peak of, or we can say the starting of Green Revolution period, and the entire discussion of rural non-farm sector started um, during the decade of early 70s or 80s. So in this background, um, we attempt to explore the importance of this sector in two economically diverse states of India, that is Punjab and Bihar. And um, why I am taking these two regions, because the regional variation, the when we say the rural non-farm employment, it has huge variation and diversity in terms of income generation and in terms of the skill level used in it. So we have to see what opportunity uh, is being provided by two economically, sociologically different regions in India. There are a number of studies um, by very renowned scholars worldwide or at the national level who have done a lot of research on the various composition, income composition of rural non-farm sector, the employment intensity and all. Here, the selection of, as I mentioned already, the selection of two diverse regions. Why this is important? There are some similarities in terms of the dominance of employment as well as output uh, being provided by agriculture. So these two states are primarily agrarian economies. There is a migration, huge migration trend um, from rural to urban region in Bihar as well as in Punjab, and but there is a lot of variation as well in terms of the migration itself. We can see the migration that is happening in Bihar is interstate, whereas the migration pattern in Punjab is a international migration. On the other hand, there are contrast in terms of economical diversity. Punjab is also the early adopter of Green Revolution, whereas the Bihar we can see the most of the varietal change and the agriculture practices that was led by Green Revolution is being adopted um, in recent decades. There is a difference in agriculture productivity, and we also know very well the agroecological diversity in two regions. So these are the important markers of contrast and similarities. And then we can see there is a temporal differences in terms of the emergence and the growth of rural non-farm employment. The way back in 1970s and early 1980s, the the studies of rural non-farm employment was very popular in Punjab, and that was due to um, the the opportunities provided by agriculture increasing backward as well as forward linkages due to the new inputs, new consumer demands, uh, due to increased income in Punjab.
So that was kind of a opportunity, and that led to a high growth of non-farm sector in this region. Whereas in Bihar, we can say it's a late entrant in terms of diversifying household diversification in terms of their employment, and it was largely driven by agriculture uh, and also the migration remittances. And another important point which I want to highlight is that there is only single study on the comparative analysis of Punjab and Bihar employment pattern way back in 1992 by M.R. Khurana. So this is the only study which I could manage to get. And this scholar conducted his field survey in Punjab and Bihar in 1989. So almost there is a gap of more than 30 years. So in this study, M.R. Khurana, he investigates the employment opportunities. But now we have to see what are the changes in the conditions of rural non-farm sector, and what entails a household to grab those opportunities. And also, is there any convergence between the growth of rural non-farm sector between these two states? Or there is a largely a divergence of growth trajectory of rural non-farm employment across these two regions. So now moving back to the literature on from movement of labor force from farm to non-farm sector, we can see there is a in the pre-liberalization period, the pre-reform period, the annual growth of farm employment was 1.24%, which decelerated to less than 1% in the reform period. This was a farm sector growth. And then the growth of non-farm employment, the rural non-farm employment, was 3.05% even even before the pre-reform period. Now it has increased to 3.81%. So basically the scholar uh, actually meant for the post-liberalization period indicates the period between 1992 to 2004-5. So in this period where it was touted as the neoliberal period has given more emphasis in generating rural non-farm employment, and there is a structural change, there is a visible structural change in terms of employment from movement from farm to non-farm sector. So there are a lot of studies during that period uh, uh, which argue for this hypothesis. However, there are number of other studies especially by the Vaidyanathan studies, very uh, renowned study by Vaidyanathan and G.K. Chadda in 2003. And then there are other studies which says this growth of non-farm sector is explained by the distress-driven diversification. So what are the marker of these indicators of distress-driven diversification? They say is the most of the since the agriculture sector is not able to cope up with the prices, and due to the viability of the sector has gone down, and a lot of small and marginal farmers are leaving the agriculture sector, or if they are in agriculture sector, they are not able to generate sufficient income to run their household or the consumption level. So these all kind of crises are weather induced, climate induced, or the policy induced crisis.
So this actually forced them to adopt non-farm employment. So this is the second kind of view which we see from different scholars. So basically, the literature on growth of rural non-farm sector is divided into two different streams. The first stream, we call it the pull factors. As we have seen in Punjab during 1970s or late 1980s, the growth of farm sector, which led to increased consumption growth, and that led to growth of rural non-farm um, employment, wage employment as well as self-employment in rural areas. So there are a lot of literature. I'm not going to discuss all these kind of uh, different studies, but I'm highlighting just to indicate some of these important studies. Uh, so uh, what but apart from the policy induced, we can see the economic growth induced rural non-farm sector growth, what else determines the accessibility of household uh, in taking part in rural non-farm employment are the literature which says there are household characteristics, various household characteristics um, that actually facilitate or pushes a household to adopt this kind of employment opportunities. So there are certain factors that influence accessibility, such as education, level of education, wealth, size of household, uh, then caste, village level agriculture conditions, population densities, and other regional factors. So the pull factors can be considered as high level of skill or higher education levels, then the availability of capital to invest on different employment avenues in non-farm sector, then niche market for a product, then wage differential across regions, as we can see in the case of migration. Uh, so in nutshell, the favorable factors is access to non-farm opportunities, while the push factors forces the uh, agriculture household to abandon cultivation. So both the factors, whether it is push factors or pull factors, both can be a factor of or the indicator of growing size of non-farm sector. So how to determine that? Now, there are ample studies on various aspects of rural non-farm employment growth in India, and I'm not going to throw a very novel kind of uh, um findings, but I am trying to highlight a variety of processes at the micro level that may be shaping employment opportunities for rural household at given the current uh, policies structure in India, and to understand the sources and the income of rural non-farm employment across two diverse economic settings. Then it is also important to understand what can be the possible reasons for diverse development pattern of rural non-farm across regions. So gone are those days where agriculture was the success story in Punjab. Now Punjab is also facing a lot of agrarian crisis. Now what is that is generating uh, rural non-farm employment opportunities in Punjab, and then we can compare with Bihar. Is maybe kind of can give us insights. Then how sustainable is the growth of rural non-farm employment?
especially if we see during the COVID period, most of the self-employment or petty uh, trade in rural non-farm sector or in peri-urban areas are vanished due to the shock or the lack of demand for the product from non-farm sectors. And people actually moved from non-farm sector to farm sector. So in such situations, uh, what is the sustainability of non-farm sector? Whether they are able to again adopt those kind of opportunities. So last two questions I would like to uh, see in my future research. But I want to highlight today what I have done already and what are the core points which we can discuss. So now going back to the trends in declining workforce in agriculture, the we can see in this table very clearly from 1983 to 2020-21 onwards, there's a clear dearth of employment opportunities, be it farm sector, be it non-farm sector across rural India. So the state of rural employment in India is in shambles right now, especially during the 2011-12 to 2018-19 period. And the period of 2018-19 to 2021, surprisingly, it is showing that the growth of um, the growth of farm and non-farm sector, and that is due to the just after the period of um, COVID pandemic, uh, the growth rate of employment has picked up. But the important thing to notice that is the period from 1993-94 to 2011-12 and the period after that till 2018-19. So in both these two periods, the important thing to understand is for in the 11-12 to 18-19 period, the employment for male as well as female. For male, it is almost zero. The employment growth is almost zero, and for female, it is actually negative. So we can clearly say the whether it is farm sector or non-farm sector, the employment opportunities in rural India is almost negligible. And it is the employment growth is driven by urban sector. And for female, especially the female labor force, uh, the employment opportunities, they are actually leaving the labor force in this period. So this is a cause of worry. And the non-farm sector in this period, for male, it is more than 2%. And for female, it is negative, again, 1.4%. So it's a concern for non-farm sector, and it also shows the sustainability for a longer period. When we link it with the structure transformation theories and all, we really need to think about it, whether it is promising to say that it can lead to a larger question of structure transformation. So, but across regions, if that was the all India figures, but across regions, if we say the share of agriculture in rural Bihar has declined by 32% percentage point during 1999, 2002, 17, 18, as compared to less than 3% points between 83 to 99, 2000. So in the latest period, the Bihar the shows that the farm sector growth, employment growth in Bihar shows that there is almost there is a actually 32 percentage point decline. So where this workforce is going?
But on the other hand, if we see in Punjab, this share has already declined in the previous period, that is during 83 to 2000 period. So during the previous 17 years, Punjab has already achieved this quote unquote the fiat, and we have to see where this workforce is getting absorbed. So seeing that the employment pattern in rural regions of Punjab and Bihar, we can say the in 2017-18 period, the agriculture is now less than half in Bihar, whereas industry and services together, they are contributing 50%. And whereas in Punjab, they are contributing almost around 60%. So there is we can say the growth prospects are more in rural non-farm sector in both the regions. So this poses the question: is this shift bringing any positive employment outcomes? So to understand this question, it is important to examine who actually have the access to rural non-farm employment. Because in the earlier table, the All India table, it says that there is a almost negative growth for female, and overall growth is also negative in rural region. So why this this graph for Punjab as well as in Bihar? It says the 60% in Punjab and 50% in Bihar is contributed by rural non-farm, basically industry and services sector in rural region. So, investigating this question, I have analyzed the sources of rural employment across households. So across households, if we see, it is clearly visible that the smaller size of land household, landless, semi-marginal, marginal, or small, they are actually into the non-farm employment business, whether it is wage employment or rural non-agriculture enterprises. And the larger household, um, they are doing farming, in especially in Bihar. But in Punjab, you can see they are also involved in rural non-farm employment. So we can say, roughly say, there are some options which are promising option in case of Punjab, whereas in Bihar, almost there is negligible share of non-agricultural enterprises or wage or salaried employment in case of large farmers, and also for the medium farmer, it's the share is not that much high. So it highlights that the quality of employment in the rural non-farm sector may be not promising to adopt, especially by the large land owning classes. The composition of rural household income, again, it says the maximum share of household income is being contributed by the farm sector. And when it comes to Punjab also, the story is more or less the same. So it says that it shows that there are a large number of petty opportunities that exist in both the states, and there are very small size of remunerative employment opportunities in rural non-farm sector that exist for a handful of
households. So what are those? We have to see how these households are able to grab those opportunities. I'm not going to explain this uh, table in detail. It has a lot of data and information extracted from situation assessment survey of farmers in of the 70th round of NSS. So the mean income from non-farm enterprises is from extracting from this table shows the lower than any other source across various land classes. So the the non-farm enterprises, the share of this income is across land owning classes is low, and it also needs to be mentioned that it constitute only 4.4% in Bihar, in Punjab, and 6.4% in Bihar. So it only contribute this much share of income. So for the landless, semi-marginal, marginal, the wage employment constitutes a high proportion as main source of income, followed by animal husbandry and cultivation. So these are the resource deficient households which are dependent upon rural non-farm wage employment. So on the contrary, it can be observed that households with medium and large land categories in Punjab also earn a sizable proportion of their income from non-farm sources, whereas in Bihar, these categories are entirely dependent on cultivation. So there is still uh, some section of landowning classes, high rich classes, which are still doing non-farm opportunities in Punjab, but in Bihar it is um, totally missing. So the what are the contrasting opportunities? There exist some remunerative non-farm opportunities in Punjab in which large landowning classes, as I already mentioned. Secondly, in both states, smaller land category household are engaged in rural non-farm activities where rural households do not face any barrier to entry. So the barrier to entry in terms of capital, the initial capital in terms of the education, skill, or their social status is very important. But in non-farm activities, it seems almost irrelevant. Therefore, the chances of adopting better non-farm opportunities may be, but and not for all kind of rural non-farm activities, but for um, the better remunerative non-farm activities, there can be some barriers to entry because only a fewer households are adopting these opportunities. To understand that, I did some econometric exercise, which I'm not going to explain, but I'm explaining the uh, key results out of this model. So among the uh, household factors, it is found that the household with male members are more likely to participate in non-farm sector in Bihar, indicating that non-farm sector is biased against gender, but it is partially um, it is partially due to the fact that Bihar has the history of migration, and the female farm member of the household, they are uh, they take care of the farm business and the children back home. So this can be the reason. Uh, and but in Punjab, this does not seem any barrier because most of these rural non-farm opportunities are also being adopted by uh, women workers. Whereas
age and family size are also playing a big role. As the age of household head increases, there is a higher possibility to diversify into non-farm activities in both the states. It may be expected that the age of household head increases, liabilities also increase, the number of dependents also increase. Therefore, to enhance the level of income, which could not be possible within the agriculture sector, are for resource deficient household. A household decide to participate in rural non-farm sector. So similarly, the family size is also one of the major reason which sees the uh, household to diversify for different sources of income. Now, the role of caste. The role of caste is not prominent, not seems prominent in Bihar, but in case of Punjab, it seems very prominent. But surprisingly, in case of Punjab, those who belong to other backward classes or scheduled caste, they are actually adopting non-farm sector, non-farm employment. So it has a lot of insight in terms of having access to large land holdings with high caste. And it also says the most of the uh, opportunities are lowly paid, and the resource deficient households are also the household having um, low caste. So this result is almost non-significant. I want to know why. Then the education, the factor that is considered a barrier against entering the non-farm sector is significantly noticeable for both the states. So whether it is lowly remunerative activity or highly remunerative activity, but it says there a person needs to have some sort of education skill or some skills to adopt non-farm activity as compared to the farm sector. And there are a lot of other insights coming out from the land size. The pattern between the size of land ownership and the participation in the non-farm sector is not linear in Punjab. Those who are landless or own marginal land are likely to participate in non-farm sector. However, this relation is insignificant for those who have medium land holdings. So further, the household with large land size are also likely to participate in non-farm activities. And that is only in Punjab, not in Bihar. So the contrast is the large land owning classes in Punjab are also participating in this non-farm opportunities. Whereas in Bihar, only the resource deficient households are participating. Now, coming back to these were the main results from coming from the different household characteristics. Now, coming to the public provisioning, what is happening across states to provide decent employment opportunities across states, or the expenditure on social security. In terms of spending per capita public expenditure on social security benefits, Bihar, you can see here, is the last state to spend money on it. It's less than 4,000 per capita. So it is quite below the average, all India average. And on the other hand, the well-off states which are doing better, Himachal Pradesh, Telangana, Andhra, Kerala, Tamil Nadu, Haryana, these states are spending more on the social security of
informal sector workers are also generating employment. I have the data on that employment generation. These states are also generating um, employment opportunities. So the policy-wise, if we see, Bihar is nowhere in the national picture. One of the reason why Bihar is not able to spend sufficient amount of public expenditure on different social security nets is kind of the lack of um, revenue generation by its own. Uh, Here I have taken the composition of revenue receipts across states. The composition constitute two components: the its own state's own capacity to generate revenue and its dependency on the central transfers. So now Bihar is 75% of its revenue comes from central transfers. So when we say that only 25% of its revenue is generated through its own resources, um, we do not have any problem with it. While saying that the lot of central transfer is given to Bihar, but the only problem is these are only transfers. Bihar's institutional capacity to absorb those transfer is minimal. In the quality of spending, I'm not going into that detail. We can refer to many studies. The quality of the spending is low because of the low institutional capacity in terms of availability of staff um, at the facility level, uh, and the low ability of state administration, the local administration to prepare the plans, etc. So this is one of the reason where Bihar is lacking behind. And one of the reason, there can be a number of reasons, but from the fiscal front, uh, Bihar is lagging in terms of generating its own revenue and spending on the social spending. So in conclusion, we can say in the new millennium, the non-farm sector has emerged as the option of last resort for resource deficient households. However, a large number of lowly remunerative non-farm opportunities have emerged, which provides evidences of largely a distress-driven employment diversification, which seems dominant over a demand-driven employment growth in this sector, which happened during just after Green Revolution in Punjab, and that is also stuck now in this region. There seems to be a few non-farm employment opportunities available in Punjab, in which large farm households also participate, whereas in Bihar, such a pattern is missing as of now. Therefore, the size of land is a major determining factor of participation in both states. Uh, the level of opportunities in non-farm sector seems to be converging over the decades, where Bihar is um, diversification of income within the local rural region is a new phenomena, whereas in Punjab, the 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 highly remunerative opportunities are declining, and moreover the um, households are uh, more of diversifying on low income opportunities. So barrier to entry in this sector take different shapes in these two states, where caste is a major barrier to entry in Punjab, especially in attaining gainful rural non-farm employment. Gender is a dominant factor in Bihar. Migration of male members found to be an important factor in determining the gender biased against women. Uh, there are two types of
policy challenges that need attention to address the issues of employment transformation in rural India. First, making the non-farm sector more lucrative for the rural masses through public policy provisioning and favoring this sector. Second, the providing lucrative non-farm employment opportunity through skill development, providing cheap credit and socially inclusive policies. Very, very important. Thus, we argue for creating clear institutional ownership over rural non-farm matters, which should not be treated as a parking lot for unemployed, and making high remunerative non-farm employment accessible to all. Thank you. So this is from my side, and I invite your suggestions and questions. Thank you, Gurpreet ji. Thank you. You made a wonderful presentation. There are so many data and analysis which has come into it. Now the floor is open for questions. I will invite Avnindra ji first if he wants to make any comment to start the discussion, and then others can come in. Definitely. So it's very interesting. Thank you, Gurpreet. So actually, जो आपकी बात है, it's very important, क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में लगातार ये मेंशन है कि हमें एग्रीकल्चर से लोगों को मूव कराना है दूसरे नॉन फार्म सेक्टर में। लेकिन अगर नॉन फार्म में इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छा नहीं है तो वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हमारे लिए नहीं है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जो नॉन फार्म सेक्टर में हम लोग जा रहे हैं वो कितने वायबल है, क्या वो डिस्ट्रेस ड्रिवन है या फिर एक्चुअली में उनकी इनकम इनहेंस हुई है। इनफैक्ट सुरेंद्र जोधका के भी स्टडीज में अचानक वो एक बार जब दोबारा गए एक पंजाब के विलेज में, उन्होंने पाया कि रैपिडली लोगों ने दुकान खोलना शुरू किया है। तो उन्हें लगा अगर इतना चेंज कैसे हो गया, एक साइजेबल प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन स्टार्टेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सम काइंड। जब उन्होंने इनकम सर्वे किया तब पता चला 90% ऑफ देम वेर नॉट, एक्चुअली 80 to 90% वेर नॉट प्रॉपर्ली सस्टेनेबल। तो सिर्फ ये कहना कि भाई एग्रीकल्चर से मूव हो गए हैं और शायद वो बेहतर कंडीशन में है, ये गलत है। ये आपके भी प्रेजेंटेशन से बहुत अच्छे से सामने आया। और मुझे लगता है कि जो स्टेट का रोल है, जिस तरह से बिहार कई चीजों में पीछे है स्टेट के तौर पर, स्टेट के रोल के तौर पर, उसका भी जो जिक्र किया, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम चाहते हैं बिहार में कि एग्रीकल्चर की क्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी बढ़े, एग्रीकल्चर से मूव करें, तो स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू इस तरह के पर्सपेक्टिव के लिए। मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस ये है कास्ट को लेकर बिहार में। पहली क्वेश्चन ये है कि जो सिग्निफिकेंट, जैसे पंजाब में सारे कास्ट, आपने पहले तो मुझे एक बार और वो कास्ट वाला जो डायनामिक्स है, मैं रिजल्ट आपका नहीं देख पाया, वो आप मूव कर गए उस पेज को, इकोनॉमेट्रिक्स रिजल्ट को। एक बार ब्रीफली आप मुझे कास्ट के डायनामिक्स को पंजाब और उसका बताएं। और बिहार में जैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, बिहार का जो एक रिजल्ट आपका है, वो रिजल्ट ये है कि जो नॉन फार्म में लोग जा रहे हैं बिहार में, वो उनके पास लैंड नहीं है ना, या बहुत छोटे पीस ऑफ लैंड है। तो बेसिकली ड्राइवर्स ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इज अग्रेरियन डिस्ट्रेस और डिस्ट्रेस इन ओवरऑल इनकम। जिनके पास इनकम का सोर्स नहीं है वो लोग ही नॉन फार्म में प्राइमरली जा रहे हैं, इसका ये इंडिकेशन क्लियर जाता है। और पंजाब में वो इनकम को सप्लीमेंट कर रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ फार्म इनकम, दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ नॉन फार्म एंगेजमेंट एज वेल। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है, या फिर प्रॉफिटेबल है इसके कारण वो हर तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में डेफिनेटली डिस्ट्रेस ड्रिवन है। लेकिन कास्ट का जो रूल है, क्योंकि बिहार में अगर आप जाते हैं लैंड ओनरशिप में, बहुत स्क्यूड है, मतलब लैंड ओनरशिप अदर कास्ट के फेवर में बहुत ज्यादा स्क्यूड है। तो उस सेंस में जो नॉन फार्म के तरफ मूवमेंट है, वो लोअर जो ओबीसी या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब तो बहुत कम है बिहार में, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का ज्यादा होना चाहिए बिहार में, क्योंकि उनका जो डिस्ट्रेस लेवल है वो ज्यादा है, उनका जो लैंड ओनरशिप है वो रिलेटिवली कम है। तो किस तरह का पैटर्न है, इसको आप प्लीज हाईलाइट करें एक बार।
हाँ, एक्चुअली पंजाब में जो लैंड ओनरशिप के साथ जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर है, कि जो एक तरीके से जो बिल्कुल मार्जिनल और लैंडलेस हैं या तो वो अडॉप्ट कर रहे हैं, जो मिडिल क्लासेस हैं वो उनका सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा रिजल्ट मेरा, और जो लार्ज हाउस होल्ड हैं देन दे आर ऑल्सो अडॉप्टिंग। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत स्क्यूड लेवल पे हाईली रेम्युनरेटिव एक्टिविटीज हैं, एक वो है, डिस्ट्रेस ड्रिवन है। या एक बिल्कुल लार्ज नंबर में जो लो रेम्युनरेटिव एक्टिविटीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो बीच का कुछ नहीं है। तो बीच वाले जो हाउस होल्ड हैं दे आर मोर और लेस इन एग्रीकल्चर। बट बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये था कि दोज हु आर resource deficient households, they are they are the only household who are adopting agriculture non farm activities. बट जो लार्ज और मीडियम हाउस होल्ड हैं वो मोर और लेस इस बिजनेस में नहीं है, ठीक है, उनके लिए सिग्निफिकेंट नहीं था। और दूसरी तरफ जो कास्ट का था, कास्ट का पंजाब में ये आया था रिजल्ट कि जो ओबीसीज और एससीज हैं more or less they are in this business, non-farm salary employment और business। और उसका एक बड़ा रीजन जो है पंजाब में एक ही कास्ट के लोग जो हैं वो मतलब 96 to 97% उन्हीं के पास लैंड ओनरशिप है, जो जाट कम्युनिटी है। तो वो ऑब्वियस, काफी ऑब्वियस सा रिजल्ट था मेरे लिए कि उसमें से जो सारे लोग जो हैं नॉन फार्म को वही जो डेफिशिएंट भी हैं और नॉन फार्म भी वही कर रहे हैं जो लोअर कम्युनिटी से आ रहे हैं, कास्ट से आ रहे हैं। तो ये था, बट ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आया। तो इसमें ये मुझे लग रहा है कि जो मेरी समझ है और जो रिजल्ट आया कि दोनों ही तरीके के लोग, मतलब चाहे वो अपर कास्ट हैं, लोअर कास्ट हैं, या कैसे भी सोशल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो दोनों ही तरीके से इसमें एंगेज्ड हैं नॉन फार्म सेक्टर में। मेरा एक सवाल था जी। जी, कि यदि हम लोग पंजाब और बिहार के अलावा यदि दूसरे राज्यों को देखें थोड़ा सा, जैसे राजस्थान है या ऐसे स्टेट्स जहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो ये एक मेजर मुझे लगता है गैप पंजाब और बिहार दोनों में है। बिहार में भी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर या आर्टिजनल इकोनॉमी डेवलप नहीं है, और पंजाब में भी शायद ये कमजोर है। इसलिए भी दोनों में ये सिमिलैरिटी नजर आती है। जिन स्टेट्स में आर्टिजनल एक्टिविटीज ज्यादा बेटर है, उनसे यदि हम लोग कंपेयर करें तो कुछ समझ में आएगा कि नॉन फार्म एक्टिविटी का कैरेक्टर जो है वो भी अपने आप में कितना सिग्निफिकेंस रखता है। हाँ, नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है सर ये। बट एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये एक आपने अच्छा इनपुट दिया जो हैंडीक्राफ्ट का है। बट पंजाब में अगर देखा जाए तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर था, वो शहरों के अलावा गांव में भी बहुत था। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हौजरी का और साइकिल के जो छोटे छोटे मटेरियल जो बनते थे, पार्ट्स बनते थे, तो उस तरीके का गांव में बहुत था उनका। मतलब इंडस्ट्रियल हब तो पेरी अर्बन रीजन में थी, बट उसका जो आउटसोर्सिंग का काम था वो विलेजेस में भी था। और जो वर्कशॉप वगैरह जो होती हैं इनकी, जो टूल्स वगैरह एग्रीकल्चर के जो जितना भी है वो काफी इमर्ज हुआ था। बट अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ पंजाब में वो सारा वैनिश होता जा रहा है। दे आर ऑल बीइंग ड्रिवन बाय लार्ज कंपनीज। जैसे एक प्रीत ट्रैक्टर नाम की एक कंपनी है जो कि बहुत इमर्ज हुई है पिछले 10 सालों में। तो जितना भी छोटा मोटा टूल्स, ट्रैक्टर, बड़े कंबाइन हार्वेस्टर, सब में उसका एक तरीके से मोनोपोलाइज कर दिया है। तो ये तो मैं एक बिजनेस हाउस की बात कर रहा हूँ। अक्रॉस पंजाब अगर आप जाएंगे तो जो मल्टीनेशनल नहीं, जो विद इन पंजाब जो एक बड़े कैपिटलिस्ट इमर्ज हुए हैं, और वो लैंड ओनिंग क्लासेस ही इमर्ज हुए हैं वहां से। तो अपना उन्होंने ब्रांड बना लिया। जैसे प्रीत ट्रैक्टर जो आप देखेंगे, सर्च करेंगे,
नाउ इट्स इमर्जिंग एज अ बिग ब्रांड, और मतलब पूरे इंडिया में जो वो ट्रैक्टर उन्होंने बना दिया और वो चल भी रहा है। तो इस तरीके से जो स्मॉल बिजनेसेस थे, वो एक पॉलिसी पैरालिसिस तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जितने भी बिग हाउसेस हैं, पॉलिसीज ने उनको एक तरीके से फेवर किया है, और मतलब जो पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड में, तो जो छोटे बिजनेस वाले थे वो सारे धीरे धीरे वैनिश हो गए हैं। उनकी स्टोर्स वगैरह या जो वर्कशॉप्स थी वो खत्म होती जा रही हैं। अभी जितना भी मर्ज हो रहे हैं वो, जैसे बहुत पैटी ट्रेड्स, जैसे टेलर्स हैं। टेलरिंग के लिए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, एक आपको जगह चाहिए। तो टेलर एक गांव में पहले 2 थे या 3 थे या 4 थे, अब जाके देखेंगे मतलब टेलर 20 मिल जाएंगे आपको एक गांव में। 100 की पॉपुलेशन के पीछे 20 टेलर मिल जाएंगे। 100 की पॉपुलेशन के पीछे जो किराना स्टोर है वो कम से कम आपको 20-25, मतलब हर किसी ने अपने घर के बाहर एक शॉप डाल ली, एक शटर बना लिया, घर में पैसा लगा के, और बाहर एक छोटी सी दुकान बना ली। तो मतलब इस तरीके के जो पैटी ट्रेड्स हैं वो हाल फिलहाल में 15 सालों में बहुत ही मर्ज हुए हैं पंजाब में। तो ये एक तरीके का मतलब डाउनवर्ड जो शिफ्ट बोल सकते हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एक तरीके से इमर्ज हुआ था, वो कम हो रहा है, और डिस्ट्रेस ड्रिवन जो है वो बढ़ रहा है। जस्ट एक पॉइंट में ये इसमें ऐड करना, रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, जो चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा है, जो ट्रेड सरप्लस है, उसमें एक बड़ा पार्ट इन छोटे चीजों का है, जो इंडिया में ग्रामीण जगहों से होता था ज्यादातर, या छोटे अर्बन जगह से होता था। तो जो चाइनीज ट्रेड की जो मात्रा बढ़ती जा रही है इंडिया में, वो कहीं कहीं रूरल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में समहाउ वो फेल दे रहा है बहुत बड़े कई लोग। इसमें क्या है, आपका वो सेंस बनता है उसमें? बिल्कुल, क्योंकि चीप अवेलेबल है कंजम्पशन। ऐसा तो नहीं है कि कंजम्पशन कम हो गई है, वो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अगर ठीक है, क्राइसिस भी है, वायबिलिटी कम हुई है, बट प्रोडक्शन तो अभी भी बढ़ ही रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ ही रही है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल स्टेगनेंट है। तो कंजम्पशन तो है ही, बट जो आपने बोला कि चीप अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन गुड्स, खासतौर पे जो चाइनीज ट्रेड है, चाहे हैंडीक्राफ्ट जो सर ने बोला, जैसे फुलकारी एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोडक्ट माना जाता था पंजाब का, जो घरों में बनाते थे, छोटे छोटे उसके जो मतलब कुटीर उद्योग वगैरह जो होते थे वहां पे बनते थे, तो वो बिल्कुल खत्म हो गया अभी फुलकारी, क्योंकि वो फुलकारी जो है चाइनीज प्रोडक्ट भी आ गया, वो मशीन पे आपको उतने रेट में अगर 5,000 का मिलेगा, तो वही जो आपको बाहर से 1,000-1,200 का मिल जाएगा। तो उसमें तो है ही, मतलब लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए वो वैनिश होते जा रहे हैं उस तरीके के। और भी कोई सवाल? एक मेरा एक सॉर्ट ऑफ एक वो था, इंक्वायरी था कि पंजाब और बिहार का पैटर्न ऑफ माइग्रेशन जो है, जैसे पंजाब से हम देख रहे हैं कनाडा लोग बहुत जा रहे हैं, और पंजाब में फिरोजपुर गया था कुछ साल पहले, तो वहां देखा कि हर जगह पे गली में वो टफेल का और आईलेट का हर जगह एक तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए थे। और कुछ लोगों से जो मैंने बात किया तो वो बता रहे थे कि मतलब जमीन बेच करके भी लोग मतलब उसमें वो जा रहे हैं, मतलब उनका एक ही रहता है कि मतलब किसी तरह यहाँ से वो निकल जाए। हालांकि उसका बहुत सारा वो रीजन भी बता रहे थे, ड्रग ट्रैफिकिंग और बहुत सारी चीजों को लेकर बता रहे थे। और जो माइग्रेशन का पैटर्न है बिहार में भी, मतलब वो बहुत ज्यादा ही है, इनफैक्ट दिल्ली, मुंबई, पंजाब या हर जगह पे। तो वो जो नॉन फार्मिंग सेक्टर है, वो आप उसको कैसे, लेकिन बहुत पॉलिसी का आप कैसे देखते हैं, या डेमोग्राफी का रोल कैसे देखते हैं इसको पूरी तरह से? मतलब जैसे आपने कहा डेमोग्राफी, जेंडर का बात आपने किया कि फीमेल एम्प्लॉयमेंट जो है नॉन फार्मिंग में बिहार में कम है कंपैरेटिवली,
लेकिन अगर लार्जली देखा जाए तो सोसाइटल स्ट्रक्चर पंजाब और बिहार का लार्जली पेट्रियार्कल रहा है वैल्यूज, और उसमें इनफैक्ट ज्यादा एग्रेरियन सोसाइटी एक एक हालांकि वो नॉर्म तो नहीं, मतलब एक जनरलाइजेशन मानते हैं सोशलिस्ट, लेकिन है एक बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है पंजाब या हरियाणा या जो भी एग्रेरियन सोसाइटी है। तो उसको आप कैसे देखते हैं बिहार में? उसको ये पूरा डायनामिक्स आप कैसे देखते हैं? नहीं, जो रिसेंट अभी अगर माइग्रेशन देखा जाए और मतलब थोड़ा 3-4 दिन पहले रवीश कुमार का भी अगर आप वो देखेंगे तो उसमें भी आया कि पंजाब और गुजरात से इतना ज्यादा इंटरनेशनल माइग्रेशन है। कंपोजिशन तो चेंज हो ही रहा है मतलब उस तरीके से। बट मैं इसको मानूंगा कि जो रूरल एग्रीकल्चर लेड ग्रोथ थी रूरल नॉन फार्म में 70s में और 80s में, जो बहुत ही अच्छा माना गया था, और ये बोला गया था कि पूरे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा अगर अडॉप्ट कर लेंगे तो नॉन फार्म बहुत जल्दी ग्रो करेगा और स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बट अगर इसको अब इस अगर ये अब देखा जाए तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आई वुड से कि इज अ पार्ट ऑफ देयर कोपिंग अप स्ट्रेटजी। ठीक है, तो क्योंकि वो कौन जा रहा है वहां से, चाहे वो कनाडा यूएस आपको सब दिख रहे हैं कि जा रहे हैं, बट रिसोर्स डेफिशिएंट हाउस होल्ड भी जा रहे हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि सब सारे ही जो बहुत अमीर हैं वो जा रहे हैं। तो चाहे वो 1 एकड़ का या आधे एकड़ का मालिक है तो वो अपना जमीन बेच के भी जा रहे हैं, लोन लेके भी जा रहे हैं। तो हजारों एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे। तो इससे जो सोशल फैब्रिक जो चेंज हुआ है उस पर मैं ज्यादा कमेंट तो नहीं कर सकता, बट जो इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं वो बहुत ह्यूज हैं। क्योंकि अब जो नेक्स्ट जनरेशन है, पहले था रिपेट्रिएशन ज्यादा थी, कोई जा रहा था घर से एक या दो लोग, वो वापस पैसा भेज रहे थे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी। तो फिर उससे रूरल नॉन फार्म में कोई अच्छी शॉप खोल ली, कुछ अच्छा काम कर लिया, उस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे थे। बट अब वो इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं कर रहे यहाँ पे। उल्टा यहाँ की जो भी चीजें बेच के वो अपने पशु खलियान जो जो भी है वो बेच के वहीं पे जा रहे हैं, और वहीं पे अपने प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक बहुत मेजर चेंज है। और गांव में जाएंगे तो तकरीबन जो एज्ड लोग हमें दिखेंगे, बहुत यंग लोग दिखेंगे नहीं। और मतलब मुझे लोग अभी भी बोलते हैं कि आप यहाँ पे, वह कई बार हंसी में अगर बात होती है लाइटर मूवमेंट में, तो मुझे अभी बोलते हैं कि अच्छा आप यहाँ क्या कर रहे हो, यू आर नॉट सक्सेसफुल इफ यू आर नॉट शिफ्टेड टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ये सोशल नॉर्म एक तरीके से ऐसा बन चुका है कि एक होपफुलनेस जो होता है ना, कि होपलेसनेस, कि यहाँ पे अब कुछ नहीं है, अब यहाँ से छोड़ के जाओ, चाहे वो फार्म सेक्टर है चाहे नॉन फार्म है। तो एक पूरा अच्छे से ये अडॉप्ट हो चुका है, इंटरनलाइज कर चुके हैं लोग कि एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। तो ये चेंज तो बहुत मेजर आया है अभी पिछले 20 साल में। शैलेंद्र जी का एक सवाल है कि ये जो पंजाब में इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें क्या शॉप्स खोलना ही सबसे बड़ा कंपोनेंट है, या और भी कोई चीज है जो दिखाई देती है? शॉप्स के जी अलावा और क्या चीज कोई दिखाई देती है? जी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो बहुत बूम किया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, या वो जो बड़े किसान हैं वो डाइवर्सिफाई कर लेंगे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की शॉप खोल ली, हार्डवेयर का कुछ खोल लिया। और बाकी जो गरीब लोग हैं वो वेज एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे, जो लोकल लेबर जो है। अच्छा, उनको भी फिर जो माइग्रेटेड लेबर जो है उनके साथ भी कंपैरिजन किया जाता है, कंपटीशन है। तो ये जो पैसा है, जो आप सोचेंगे कि क्राइसिस है फार्म सेक्टर में, नॉन फार्म वैसे नहीं बढ़ रहा, तो कहाँ से घर बना रहे हैं फिर? जो पैसा है ये सारा फॉरेन का जो रिपेट्रिएशन जो मनी है, उसके चलते सेक्टर में बूम हुआ है कंस्ट्रक्शन में। और तो कोई सवाल?
जी सॉरी सर, मैं ऐड करना चाहूंगा, जो इंडस्ट्रियल रूरल इंडस्ट्री में जो चेंज आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है। पॉजिटिव चेंज ग्रो और होना चाहिए था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, वो नेगेटिव हुआ है, उल्टा हुआ है वो। बिल्कुल बिल्कुल। माओ का एक बहुत फेमस ये था कि आउटसाइड फार्म इनसाइड विलेज, और चाइना ने उस पॉलिसी का बहुत फायदा उठाया है बहुत लंबे समय तक। हालांकि उसके भी डिबैकल्स रहे हैं, जो बहुत सारे फाउंड्रीज बनाई गई वो सब बेकार हो गए। लेकिन चाइना का जो आज हम इकॉनमी देख रहे हैं उसमें आउटसाइड फार्म इनसाइड विलेज स्लोगन का बहुत बड़ा रोल रहा है। और अनादि फाउंडेशन के बारे में हम बताएं कि हम लोग भी कम से कम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसका कोई मॉडल क्रिएट किया जाए, या कोशिश की जाए कि क्या हो सकता है क्या कि गांव में लोग रहें तो गांव में, लेकिन खेती के अलावा कोई काम करे जो उत्पादक हो। और उसमें खास तौर से हम हैंडीक्राफ्ट की भूमिका देखते हैं। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को ग्रो करना, आर्टिजनल इकोनॉमी को ग्रो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम चाहेंगे कि यदि आप कभी इसके बारे में कभी हमें बताइए, या और भी कोई साथी जो कोई प्रोफेसर यदि तैयार हो, कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से रिलेटेड क्या डिबेट्स हैं और क्यों नहीं हम लोग उसको एक मेजर सेक्टर बना रहे हैं। कम से कम 40% जो लेबर फोर्स है वो आर्टिजनल इकोनॉमी में आना चाहिए, तभी कोई इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। और बड़े इंडस्ट्री तो अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर नहीं सकते हैं, वो तो मैकेनाइज्ड होते जा रहे हैं, एआई बेस्ड होते जा रहे हैं। तो जो हाथ से करने वाला काम है उसका अभी भी एक मार्केट है क्या, ये एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और उसमें कैसे डायनेमिज्म लाया जा सकता है। तो जो प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका एक बहुत बड़ा टास्क है ये, कि वो सिर्फ सरेंडर न कर दें, और एक कुछ बना करके देखिए इक्वेशन की क्या ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जिसमें कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर के रूप में इमर्ज कर सकता है, पंजाब के लिए भी, बिहार के लिए भी, और दूसरे राज्यों के लिए भी। और कोई सवाल हो तो स्वागत है। नमस्कार, मैं एक सवाल पूछ सकता जरूर पूछिए। हूँ? ये जो अभी प्रदीप जी ने शैलेंद्र जी, आप ऑन कर सकते हैं क्या? वीडियो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है। जी, तो ये जो नॉन फार्म इनकम था, स्पेसिफिकली ऑफ द काइंड, स्पेसिफिकली काइंड जिसमें कि टेलरिंग शॉप्स है, इस टाइप की चीजें हैं, या मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स है, ये इसका कोई हिस्टोरिकल ट्रेंड है? मतलब कि कैन बी से कि पिछले 8-10 साल में ये बढ़ा है, या एक लीनियर प्रोग्रेशन है, या इसमें जंप लिया है इस एक्टिविटी ने? हैज इट बीन सडनली कितनी पिछले 3-4-5 सालों में हुआ है? क्या इसके बारे में कोई 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 डेटा है, सेट है अपने पास? जी। जी सर, एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अपने सर्वे में कि 15 साल पहले क्या करते थे लोग। गुड। तो उसमें जो अभी मैंने देखा कि जो चेंज है 15 इयर्स का, मतलब तकरीबन साल 2005 के आसपास वो क्या करते थे और साल 2020 के आसपास वो क्या कर रहे हैं। नहीं, मैंने थोड़ा सा अर्ली में बोलूंगा, 2002 के आसपास क्या करते थे और 2016 के आसपास क्या कर रहे हैं। तो उसमें ये निकल के आया कि जो फार्म सेक्टर अभी छोड़ रहे हैं जो लोग भी, वो उनकी एक चाहत है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके ज्यादा, कि हम किसी के डिपेंडेंट ना हो। फार्म में वो क्योंकि जमीन इतनी नहीं है कि वो पूरे घर का गुजारा कर सके, और वो अपने ही लैंड, कोई और लैंडलॉर्ड जो है उसके अंडर काम भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें कास्ट डायनेमिक्स भी हैं, और क्योंकि खुद के पास इतनी जमीन है कि वो मतलब एक जो सोशल स्टेटस थोड़ा सा है, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि मैं किसी और के पास काम करूं। तो जितने भी पिछले 15 साल में एक्टिविटीज इंक्रीज हुई हैं, या वो टेलरिंग, राशन शॉप्स, छोटा मोटा कोई मोबाइल रिपेयरिंग स्टोर, खासतौर पे रिचार्ज वाले जो शॉप्स हैं या एसेसरी, तो इसमें बहुत जंप हुआ है। और सरप्राइजिंगली ये भी चीज है कि अगर कंजम्पशन पैटर्न देखें गांव में, तो ये भी निकल के आता है कि प्रेफर लोग कर रहे हैं कि जो नियर बाय टाउन है वहां जाके हम, अगर मोबाइल का न्यू कवर या कुछ ऐसा न्यू मोबाइल आया तो नियर बाय टाउन में वो सस्ता मिलेगा। तो इससे क्या हम निकालें, और अगर उनके रिटर्न्स वगैरह देखें, उनका इनकम का पैटर्न देखें, तो बहुत बहुत लो है। मतलब
उनकी जो फार्म एक्टिविटी से भी वो कम है। तो इससे हम क्या निकालें कि वो एक्टिविटीज जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जो स्टोर्स खोले जा रहे हैं छोटे छोटे, वो जरूर खोल रहे हैं बट सस्टेनेबल नहीं है। वो कितनी देर, अगर उसको किराया भी उसका ज्यादा मिलना शुरू हो गया उसकी जगह का, तो वो लीव कर जाएगा। तो जो चेंजिंग पैटर्न है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है। वो अगर कुछ भी उसको 500 रुपया भी अगर ज्यादा मिलेगा मंथली, तो कहीं और शिफ्ट कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक शॉप खोल के वो बैठा हुआ है और वो सोचेगा कि ठीक है, इससे एम्प्लॉयमेंट आने वाले कुछ साल में ठीक हो जाएगा या नहीं। तो बहुत डायनामिक है, क्योंकि जो जो कैपिटल एंट्री है, एंट्री करने के लिए जो कैपिटल है रिक्वायरमेंट, वो बहुत लो है, बहुत ज्यादा नहीं है उसमें। तो मतलब दिस इज नॉट अ गुड साइन अगर देखा जाए तो। इनफैक्ट जस्ट एक एडिशन मैं चाहूंगा। नेशनल लेवल डेटा, ऑफ कोर्स बिहार पर नहीं है मेरा, मैंने नेशनल लेवल डेटा पे काम किया था। तो एक डायरेक्ट लिंकेज है, ये जो राइज इन नॉन फार्म एक्टिविटी है, ये डायरेक्टली एग्रेरियन डिस्ट्रेस के साथ लिंक्ड है। तो इनफैक्ट 2004 में अचानक से जब ये एनएसएस की सर्वे आई 2004-05 वाली, उसमें अचानक देखा गया कि बिहार में भी और पूरे देश में वुमेन वुमेन ज्यादा आने लगे हैं जॉब में अचानक, और नॉन फार्म एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। तो ये इंडिया साइनिंग वाला टाइम था, और इसमें लोगों ने कहा कि भाई देखो इंडिया साइनिंग है, एग्रीकल्चर लोग छोड़ रहे हैं और डाइवर्सिफाई हो रहा है। और इसके बाद जब 2006 में नरेगा उस समय की, और बाद में मनरेगा की शुरुआत हुई, जब 2009-10 में दोबारा सर्वे हुआ, पाया गया जितने लोग एग्रीकल्चर छोड़ के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चले गए थे, सारे लोग भाग के वापस मनरेगा में आ गए हैं और वापस डाउन हो गया है। तो 2000 उसके बाद 9 से 11 में जब एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइस बढ़ रहे थे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, तो नॉन फार्म सेक्टर काफी डाउन हो गया। और फिर से अभी रिसेंटली जो पोस्ट कोविड है, इसमें नॉन फार्म सेक्टर अचानक से साइज बहुत बढ़ गया है। तो इनफैक्ट जो नेशनल लेवल पर ये लिंक बहुत क्लियर है कि एग्रीरियन डिस्ट्रेस के साथ नॉन फार्म एक्टिविटी बढ़ती है, और एग्रीरियन प्रोस्पेरिटी अगर किसी साल में है तो वो नीचे डाउन होती है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या वो एक लाइवलीहुड, एक लास्ट रिजॉर्ट है, या फिर एक एक्चुअली मोबिलिटी टुवर्ड्स हायर इनकम है। उस पर एक प्रश्न खड़ा करता है, बिहार के लिए भी, पूरे देश के लिए भी। शैलेंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी, वो मेरा तो यही कहना था कि नहीं, वो शैलेंद्र मोहन झा। ओके। मैं गांव की एक सिचुएशन बताना चाह रहा हूँ बिहार के गांवों का, कि कम्युनिटी लाइफ खत्म होने के कारण अब हर एक गांव में, बिहार के मैक्सिमम गांव में यह स्थिति हो रही है कि एक ऐसा वर्ग निकल रहा है जो सारी सुविधा देती है। जैसे मैरिज ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए वो टेंट देता है, उसके लिए वो बर्तन देता है, खाना बनाने वाला देता है, और आरओ लगाया गया है, पानी देता है, सब कुछ जनरेटर तक देता है, एसी तक अब रेंट पर गांव में मिलने लगा है। तो यह जो ग्रुप बिजनेसमैन का है वह हर एक गांव में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है कि कम्युनिटी लाइफ के कमजोर होने का यह नतीजा है। पहले लोग, गांव के लोग आपस में ही मिलकर सारा खाना बना लेते थे किसी इस तरह के ओकेजन पर, लेकिन अब वह प्रोफेशनल ग्रुप है, और प्रोफेशनल ग्रुप यह सारा कुछ इवेंट मैनेजमेंट करता है। तो यह चीज हर एक गांव में बहुत तेजी से उभर रही है, और मुझे लगता है कि यह नॉन फार्मिंग सेक्टर के लिए अच्छा ही प्रोग्रेस पाला जाएगा। और कोई सवाल? मेरा एक सवाल तो नहीं है, मतलब उसी टाइप का कुछ है। मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ। 2005 में 2005-06 में उस समय मैं किसी न्यूज नेटवर्क में काम करता था, तो वहाँ पर बिहार के ही हमारे साथी थे। उन्होंने एक प्रोग्राम को वो प्रपोज किया, बदलती बदलते गांव। उसका थीम ये था कि जो नॉन फार्म इनकम है एज ए सप्लीमेंटल इनकम, उसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपके पास जमीन है या नहीं है, फसल अच्छी हुई है नहीं है, सप्लीमेंटल वो बहुत ही कम होती थी। लार्जली मोबाइल एक्सेसरीज और टिकली बिंदी इस टाइप के, और टेलरिंग ऐसे इस टाइप की एक्टिविटीज होती थी।
तो वो गांव के शेप, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, वो करीब कोई गली ऐसी नहीं थी हमने पाया। ये 4 हिंदी राज्यों में इसको हमने किया, और रोज एक अलग डिस्ट्रिक्ट गांव लिया करते थे। तो कोई, ये 2005-6 की बात है। तो दैट हैज कंटिन्यूड। सो ये अभी जो बात की थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद अमरीन जी थे, कि अगर कोई इसके ऊपर स्टडी हुई है कि इस प्रकार की एक्टिविटी का एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट से इनवर्स रिलेशन है, तो आई विल रियली लाइक टू रीड दैट। थैंक यू। Sure, will share. There are studies, evidence-based studies. मैंने भी एक बिहार के भी पेपर में लिखा था पहले, बट और भी स्टडीज हैं, रिसेंट स्टडीज भी हैं जो लिंक करती हैं। और जी, कोई आई सवाल, विल बी वेरी हैप्पी इफ यू शेयर इट। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? यदि सवाल नहीं हो तो हम लोग सेशन को खत्म करेंगे। मैं एक, बोलिए सत्यनारायण जी। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत नई चीज हम लोग को जानकारी दी, और हमें साथ साथ निराशा भी हाथ लगी, क्योंकि हम लोग को कहा जाता था कि बिहार प्राइमरी सेक्टर, बेसिकली एग्रो बेस्ड इकोनॉमी के माध्यम से ही अपनी स्थिति सुधार सकता है। लेकिन जो स्थिति है अभी एग्रीकल्चर सेक्टर का, उससे बड़ा ही निराशा जनक स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि आखिर ऑल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर था या फिर टर्सरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वे वहां पर भी इतना मारामारी है। मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगा दरभंगा से। दरभंगा में बेसिकली लोग इनकम का स्रोत हुआ आवाज कट करता रही है था, या आपकी। तो कलेक्ट्रेट था, या यूनिवर्सिटी, या फिर कोर्ट। आपकी आवाज तीन कट ही रही है जगह शैलेंद्र, थे जहां पर लोग सत्येंद्र एम्प्लॉयमेंट सत्यनारायण जी। पाते थे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो अगर स्थिति ऐसी हो, तो बेसिक नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अभी हाँ, आवाज जा रही है क्या? नहीं जा आवाज रही है, हाँ, अच्छा। दिक्कत हो तो रही है। यह, शॉर्ट कीजिए। तो कोई बात नहीं है, इतना ही अभी जो मेरा प्रश्न है वही कि बिहार के आखिर आखिर बिहार के साथ आखिर क्या विकल्प है, हाँ, क्योंकि थैंक यू। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुरप्रीत जी कुछ बोलना चाहेंगे इस पर, हाँ। क्वेश्चन ऑफ ऑल्टरनेटिव? नहीं, ऑल्टरनेटिव वही मैंने अपने वे फॉरवर्ड में भी बोला कि और प्रदीप जी ने भी बोला कि जैसे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, उद्योगीकरण, मतलब लोकल लेवल पे उद्योगीकरण बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज में देखें कि गांव के लोग जो एग्रीकल्चर से निकल के बहुत हाईटेक होके मतलब मल्टीनेशनल में जॉब लेना शुरू कर दें। उसके लिए अभी बहुत स्किल लेवल को भी इनहेंस करने की जरूरत है। उससे पहले मुझे लग रहा है कि जो नंबर ऑफ क्वालिटी से भी पहले कम से कम जॉब्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, हमें उसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन ही एक ऐसी चीज है जो हम स्किप कर चुके हैं, और डायरेक्टली हम सर्विस सेक्टर की ओर जा रहे हैं, फार्म से सर्विस सेक्टर, जो कितना प्रॉमिसिंग अभी तक तो नहीं लग रहा। तो सरकार का ये है कि बहुत एक्टिव रोल होना जरूरी है, और कम से कम रूरल नॉन फार्म सेक्टर के लिए एकदम इनडिफरेंट रही है सरकार। कभी भी आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट बजट का देखेंगे तो रूरल नॉन फार्म का कभी नाम नहीं आएगा, या फार्म सेक्टर का आएगा या फिर सीधा डिजिटल इकोनॉमी का नाम आएगा, सर्विस सेक्टर का नाम आएगा। तो मतलब रूरल नॉन फार्म को लेके हम जब तक सीरियस नहीं होंगे और उसके लिए एडिक्वेट पब्लिक प्रोविजनिंग नहीं हो पाएगी, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ चेंज आएगा। तो चेंज मतलब बड़ा पॉलिसी का क्वेश्चन है ये, और समझ लाने की जरूरत है हमें। ठीक, जी, धन्यवाद धन्यवाद गुरप्रीत जी, इस बहुत अच्छे विषय को उठाने के लिए, और सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाला। धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे 13
जनवरी को हमारा अब अगला वेबिनार होगा और बहुत अच्छा थीम है, एक सोशियोलॉजिस्ट बोलेंगे, हम उसकी सूचना आपको फिर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।